दोस्तों, 2 वीडियो मैं प्ले करूँगा छोटा-छोटा। देखिए कि कॉमन सेंस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और उसको ख़त्म करने के बाद उसका रिज़ल्ट कैसा होता है। प्लीज़ वन कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। फर्स्ट कॉज़। Flat Earth has long been denigrated, derided, and disparaged as being the most crackpot of all conspiracy theories, marginalized, mocked, and ridiculed for centuries as being an ignorant, ancient, unscientific worldview. But the facts of the matter are far from what you have been told. When thoroughly examined and diligently researched with an open mind, any skeptical, critical thinker will find it is actually the tilting, wobbling, spinning spaceball Earth promoted by NASA and taught in schools that is truly ridiculous and unscientific. The following are 20 ways anyone can prove for themselves that Earth is a level, stationary plane. 1. Common sense. It cannot be overstated or overemphasized. The most important thing to realize, and most obvious way to know you are not spinning on a ball, is your own common sense and lived experience. You have always, and will always, experience yourself as living right side up on a motionless earth, with the sun, moon, and stars revolving over and around you. This is common sense, and what everyone in the world personally experiences every day of their lives. We are taught to believe otherwise, however, many things completely contrary to our own common sense and experience from a very early age. We are told that people living down under the spinning ball Earth in Australia are actually living upside down relative to those residing in the northern hemisphere, while an invisible force, strong enough to hold people, buildings, and oceans stuck to the underside of a rapidly rotating ball, but weak enough to allow birds, bugs, and planes to take off and fly with ease, keeps Earth's atmosphere spinning in perfect balance and holds everyone firmly to the surface without crushing us. We can clearly see that the horizon is horizontal, but we are told it curves. We can feel that the earth under our feet is motionless, but we are told it moves. We can observe the luminaries revolving around us, but we are told it is us that revolves. It is obvious that stars are stars, but we are told that stars are suns. We can see the sun is bigger than the stars, but we are told stars are bigger than the sun. We can see the sun and moon are the same size, but we are told the sun is 400 times larger. It is obvious that up is up and down is down, but we are told there is no such thing. As stated by Flat Earth author David Wardlaw Scott, with the modern astronomer there is theoretically neither up nor down, though his experience belies his assertion every time he looks up to the heavens or down to the ground. Such aberration of intellect is really to be pitied. The 3rd century philosopher Lactantius was similarly perturbed about the idea, stating, "A sphere where people on the other side live with their feet above their heads, where rain, snow, and hail fall upwards, where trees and crops grow upside down, and the sky is lower than the ground? The ancient wonder of the hanging gardens of Babylon dwindle into nothing in comparison to the fields, seas, towns, and mountains that pagan philosophers believed to be hanging from the earth without support." Truly, the idea that people are standing, ships are sailing, and planes are flying upside down on certain parts of Earth, while others are tilted at 90 degrees and all other impossible angles, is utter absurdity and an affront to common sense. In fact, common sense is the first casualty of globe belief. No child or unindoctrinated man would ever conclude or even conceive, if given to their own devices, based on their own personal observations, that Earth was a spinning ball revolving around the sun. When children are indoctrinated from a very early age to abandon their common sense and lived experience of a geocentric plane Earth in favor of this nonsensical, heliocentric globe model taught in schools, a schism occurs in their psyche. No longer can they trust their own senses and experience, and instead
must trust information completely contrary to it, taught by supposed experts and authority figures who insist their version of reality is correct. When children see that every adult around them believes wholeheartedly in the spinning globe, and hear that only our ignorant, unscientific ancestors believed otherwise, they readily abandon the empirical evidence of their senses and adopt the prevailing nonsensical model. As stated by Flat Earth author E. Eschini, the one thing the fable of the revolving earth has done, it has shown the terrible power of a lie. A lie has the power to make a man a mental slave, so that he dares not back the evidence of his own senses, to deny the plain and obvious movement of the sun he sees before him. When he feels himself standing on an earth utterly devoid of motion, at the suggestion of someone else, he is prepared to accept that he is spinning furiously round. When he sees a bird flying and gaining over the ground, he is prepared to believe that the ground is really traveling a great number of times faster than the bird. And finally, in order to uphold the imagination of a madman, he is prepared to accuse his maker of forming him a sensiferous lie. 2. Fake photographs. One of the main reasons the average person believes the world is a समझ में आ गया कैसे हमारा कॉमन सेंस को धीरे धीरे खत्म किया गया है। अभी देखो खत्म होने का रिजल्ट क्या होता पहली है। बार हुआ मानव के इतिहास में कि पहले टेलीविजन पर आती है कोई बीमारी और फिर वो शहरों में आती है, फिर वो गांव में आती है। पहले वो बुजुर्गों में आती है, फिर वो जवानों में आती है, फिर वो बच्चों में आती है। जैसे पहले टीवी में आएगी, उसके बाद आएगी, फिर टाइम पहले बता देगा कि इस टाइम आएगी। बिल गेट सबसे पहले बताएगा, फिर प्रधानमंत्री बताएगा और फिर वो जो डॉक्टर है वो बताएगा। फिर वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं बीमार हूं तो मुझे पता होगा ना। वो कहेगा नहीं, तेरे को बीमारी है, तेरे को पता नहीं चलेगा। अच्छा फिर कैसे पता चलेगा? कि वो एक टेस्ट कराना पड़ेगा। अच्छा वो टेस्ट में हमेशा सही रिपोर्ट आती है क्या? कहते नहीं, गलत रिपोर्ट भी आ सकती है। अच्छा फिर अगर आ जाए तो फॉल्स पॉजिटिव खूब होते हैं, तो फिर इसका मतलब मेरे को नहीं है। कहते नहीं, हो सकती है। अच्छा फिर कैसे पता चलेगा? कि टेस्ट ही बताएगा। लेकिन मेरे को सिम्टम तो नहीं है। नहीं, असिम्टोमेटिक है। फिर मेरे को जब कोई दिक्कत ही नहीं तो मेरे को रहने दो। नहीं नहीं, तू औरों को फैला सकता है। अच्छा औरों को फैला सकता है तो तुम्हें मुंह पे कोई कपड़ा बांधना पड़ेगा। अच्छा ये बांधने से रुक जाएगा? कहते नहीं, रुकेगा नहीं। तो फिर इसका फायदा क्या? तो बस उतनी बुरी तरह से नहीं फैलेगा। अच्छा तो फिर इसके क्या इलाज है? कि तुम्हें कुछ लगवाना पड़ेगा। तुम्हें लगवा लिया फिर ठीक रहूंगा मैं, फिर तो नहीं फैला सकता। नहीं फिर तो नहीं मेरे को होएगा पॉजिटिव। कहता नहीं, हो सकता है। फिर होने वाले में और ना होने वाले में कहता इतनी बुरी तरह से नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं फैला नहीं पाऊंगा। कहता नहीं, फैला भी सकता है, लगवाने के बाद भी फैला सकता है। तो फिर क्या फर्क हो गया लगाने वाले में ना लगवाने वाले में? कि नहीं, जो लगवाया हुआ ना वो इतना नहीं फैला पाएगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा उस बीमारी से आदमी के साथ दिक्कत हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। तो जिसने लगवा लिया है उसकी भी जा सकती है। कहता हाँ, उसकी भी जा सकती है। कि भाई जब बिना लगवाए की भी जा सकती है और जाएगी भी लगवाए की भी जा सकती है, तो क्या फर्क है? कहता लगवाए हुआई की ना बुरी तरह से नहीं जाएगी। मतलब ये एक कॉमन सेंस को मारने की साजिश चल रही है। किसान आंदोलन में लाखों लोगों ने साबित किया बॉर्डर पे बैठ के कि बॉर्डर के इस तरफ सारे लोग एक ट्रॉली में बैठे हैं, मिल के खाना खा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन रहे हैं। सो कॉमन सेंस को आपको रीगेन करना है। हैव फेथ इन योर सेंस। आपको सेंस को डिस्ट्रॉय करने का ये पूरा साजिश है। आपको बताया गया है कि आप इनसिग्निफिकेंट हो इस ब्रह्मांड में, वो गलत है। आप मोस्ट सिग्निफिकेंट हो। आपके लिए ही ये सब बनाया गया है। सो वेक अप। डोंट गिव योर लाइफ टू एक्सपर्ट्स। नोबडी इज एक्सपर्ट्स हियर, दे आर फूलिंग यू। ओके, एक्सपर्ट के ऊपर अपना ज़िंदगी डालकर ऐसे तुम मौज मस्ती में मत रहा करो, ठीक है। अपना सेंस को, अपना इंटेलिजेंस को यूज करो। भगवान ने दिया है ब्रेन को, उसको इस्तेमाल करो अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए। ऐसे फालतू में उसको मौज मस्ती करो, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी यूज कर लो। थैंक यू बॉस।